कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Are you solving that queries or not? Yes. चलो, let me open the queries. There was one question 27, 28, and 29, and there were one more. Now, see here, query number 36, 37, 38. This three you don't need to do. 36, 37, 38. वो पैर वाली जो है ना, वो आप लोगों के काम का नहीं है. So don't go for that. Okay? So don't do that. I'm repeating 36, 37, 38. Okay? So now let's discuss the query number. What was it? Let me check. 27, 28, 29. Chalo. Now, what is the query in the 27th? Assume that each salesperson has a 12% commission. Produce order number, salesperson number, and amount of salesperson commission for that order. Okay. Done this, then I can close this and we can start with DBMS. हाँ ना, कुछ तो बोलो. Okay. Okay. So see here. Assume that each salesperson has a 12% commission. So we need to display the output में क्या क्या display करना है? Order number, salesperson number, and amount of the salesperson commission. So what here you can do is you can make a group, क्योंकि कमीशन तो पूरे ऑर्डर के अमाउंट पे कैलकुलेट करना है. सो वी कैन मेक अ ग्रुप अकॉर्डिंग टू द सेल्स पर्सन एज वेल एज ऑर्डर नंबर. ऐसा कोई ऑर्डर है जो 2 सेल्समैन ने लिया हो? ऐसा होगा नहीं. सेम ऑर्डर विथ 2 सेल्स पर्सन, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन. Yes or no? So we can do the grouping on the base of order number and salesperson number. And then we can calculate the commission. Yes or no? How to write it? चलो कौन बताएगा? Who will tell me how to write it? Select order number, comma, salesman number, and what we need to display? Commission. Now how to calculate commission? So amount multiply by 0.12, I can calculate it. 12% means multiply by 10 divide by 100. Instead of that, directly I can do amount into 0.12. From which table? Orders group by onum, comma, snum. And here directly not amount, but we should write some amount multiply by 0.12. So for
every order and salesperson wise, it will form a group, and whatever is the sum amount, you multiply it by 12%. That will give you that. Okay. Next is find the highest rating in each city. Put the output in the form for the city the highest rating is. चलो ये तो सबको आना चाहिए. क्या करूं? हाईएस्ट रेटिंग सिटी वाइज फाइंड करना है. जल्दी बताओ. लंदन का लंदन का हाईएस्ट रेटिंग क्या है? व्हाट इज द हाईएस्ट रेटिंग इन लंदन सिटी? बोलो. व्हाट आई नीड टू डू? व्हाट आई नीड टू डू? अरे बताते ही नहीं हो आप लोग, करते क्या हो? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा मुझे उसके लिए? क्वेश्चन क्या करूं? ग्रुपिंग. आई नीड टू डू ग्रुपिंग. किस पे ग्रुप करे? सिलेक्ट सिटी कॉमा मैक्स रेटिंग फ्रॉम. व्हाट इज द नेम ऑफ योर टेबल? क्लाइंट के कस्टमर क्या है? फ्रॉम Cust- कस्टमर ग्रुप बाय सिटी. क्या बड़ी बात है इसमें? कुछ नहीं करना है इसमें. चलो. Ma'am, format is different in question. What format it has said? For the city under in bracket city, comma the highest rating is. अरे वो तो आपको समझाने के लिए बोला है कि वहां सिटी लाना चाहिए और रेटिंग में, हाईएस्ट रेटिंग में रेटिंग की वैल्यू आनी चाहिए. हाँ तो उस मतलब उस फॉर्मेट यू में डोंट नहीं. हैव टू पुट ब्रैकेट्स, और अगर ब्रैकेट्स रखने भी हो तो मैंने आपको सिखाया है कि यू हैव टू यूज, if you don't want to do like this, you have to put double pipe sign, and whatever string you want you can put it and use again a double pipe sign. It will keep on combining the filled values whichever you want. अगर आपको वैसे भी लाना है तो भी आप ला सकते हैं. दिस आई हैव ऑलरेडी शोड यू. और उसमें इसमें तो ऐसा करना ही नहीं है. रादर इसमें आपको सिर्फ दिखाया है कि हाईएस्ट रेटिंग का मतलब है कि रेटिंग लाओ. डिस्प्ले द टोटल ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच डे एंड प्लेस द रिजल्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. टोटल ऑफ ऑर्डर्स फॉर ईच डे मतलब डेट वाइज ग्रुपिंग करो और उसको फिर ऑर्डर बाय कर दो. ये भी इट्स इजी वन, यू कैन डू इट. फाइन. सो क्लियर अप टू दिस एवरीवन? और किसी को कोई क्वेरीज में प्रॉब्लम है? मैम हाँ. 19. 19. चलो. लार्जेस्ट ऑर्डर टेकन बाय ईच सेल्स पर्सन डेट वाइज. इसमें दो, इसमें जैसे हमने ऑर्डर नंबर और सेल्स नंबर वाइज ग्रुपिंग किया ना, उसकी जगह पे उसमें किसके तरीके से ग्रुपिंग होगा? डेट एंड सेल्स नंबर, सेल्समैन नंबर, और उसमें से मैक्स अमाउंट. सिलेक्ट मैक्स अमाउंट फ्रॉम ऑर्डर ग्रुप बाय ऑर्डर डेट कॉमा सेल्समैन नंबर. Okay. ओके. एनीबडी एल्स? कोई क्वेरी में प्रॉब्लम है तो पूछो. सबने कितना क्वेरीज किए अभी तक? हाउ मेनी क्वेरीज यू हैव कंप्लीटेड? Speed it up. Next week
I want at least 50 to 70 queries completed. 15 नहीं है, 50 से 70 तक उतने queries complete होना चाहिए. So start practicing more. Okay, now I'm opening the book. Let's start with our distributed DBMS. जावा में असाइनमेंट के प्रोग्राम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? Are you having? Ma'am, your voice is cracking. My voice is cracking. Just a minute. I'm asking, are you all doing the programs of Java? Yes. कितने प्रोग्राम्स है यूनिट 1 में? 10. सब में 10 ही है? Okay. See, unit 1 you should be able to do. Unit 1 के सबने कर लिए? उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? Okay. Unit 2. Unit 2 is array inheritance and interfaces. वो भी आपको आना चाहिए. Have you done array second unit programs? Sum of two matrices and all? Yes. Done. Third is packet string and exception handling. ये भी खत्म हो चुका है. इसके सारे हो गए आप लोगों के बाकी है? ओके. पैकेज वाला ना? पैकेज वाले में क्या है? Create a package P and within that package create class pack class which have method class find max and find maximum value from 3 numbers. Now import the package within another class demo and now display the maximum number. This is easier one. चलो फिर भी नेक्स्ट सेशन में वो करवा दूंगी आप लोगों को. वो तो होना चाहिए. ये दूसरा जो पैकेज वाला है वो एक बार समझ में आता है. क्रिएट पैक 1 विद इन द पैकेज क्रिएट क्लास ए instance variable and one instance method create another package pack 2 within this package create class B is calling the method and variable of class. है कौन सा पैकेज का नहीं हुआ है? सारे ही पैकेज के नहीं हुए कि सिर्फ ये नहीं हुआ है ना? वो समझ में आता है मुझे. पहला वाला तो इजी है पैकेज वाला. ठीक है, ये वाला मैं करवा दूंगी. पैकेज 1 और पैकेज 2 वाला. उसके अलावा और ये सिर्फ मुझे 2-3 लोग ही आंसर्स दे रहे कि हाँ हो गया हमने कर लिया. बाकी सबका क्या स्टेटस है? आई एम नॉट आस्किंग जस्ट 2 और 3 स्टूडेंट्स. आई एम नॉट हियर फॉर ओनली दैट 10 स्टूडेंट्स. आप लोग क्या आपके सेम 3 के रिजल्ट से बहुत ज्यादा खुश हो के सेम 4 में काम ही नहीं करना है? And don't be in a mood that exams will be online. And online exams is a biggest disadvantage. वो तो आपको ज्यादा पता होना चाहिए.
but we have completed exceptions also. So now you should be able to do all the programs till unit 3. क्या कर पाओगे कि नहीं? कितने लोग ट्राई कर रहे हो? अगर सिर्फ उन 3-4 लोगों को देखने जाऊंगी तो उनका तो हो ही चुका है. व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ यू ऑल? आप लोग आंसर्स भी नहीं देते हो, कुछ बोलना भी नहीं चाहते हो. मैम को जो अज्यूम करना है करे. मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपको होगी. आई एम टॉकिंग फॉर योर बेनिफिट. आई एम आस्किंग फॉर योर बेनिफिट, नॉट फॉर माइन. समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या पूछ रही हूँ? नहीं किया है, स्टार्ट डूइंग. एंड दिस थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, every day I'm going to ask you to make programs from unit 1 and unit 2. थर्ड यूनिट अभी नहीं पूछूंगी, एक्सेप्शन हैंडलिंग अभी नहीं पूछना है. ठीक है? यूनिट 1 एंड 2 में से कोई भी प्रोग्राम बोलूंगी, जिसको बोलूंगी उसे रन करके दिखाना है. सो कीप सच सिस्टम्स वेयर यू कैन एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. आई कैन आस्क एनीबडी फ्रॉम एनी ऑफ द डिविजन. और जो एब्सेंट रहेंगे, a 0 marks. I'm not going to ask anything else. I'm not going to scold you. आपके इंटरनल में 0 आ जाएंगे. और इंटरनल में 0 का मतलब पता है ना क्या होगा? आप में से कोई कभी आज तक इंटरनल फेल हुआ है? हाँ या ना तो बोलो, पता चले. इन शॉर्ट, इंटरनल फेल नहीं होना है तो अटेंड कर लेना क्लास. भले जितना है जो है, मैं घर आके मार तो सकने नहीं वाली आप लोगों को. या तो उठा के नीचे भी नहीं फेंक सकती वहां से तो मैं आपको. सो यू आर एट एडवांटेज, एटलीस्ट अटेंड द क्लास. नहीं आया तो भी मैम क्या कर लेंगे? ओके, सो we don't have much time, but okay, let's discuss today the distributed database components. Do you remember what is distributed database? याद है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड DDBMS क्या है? DDBMS, it's a database management system, but which is used to manage the data and processing in a distributed databases. In distributed database, data is also distributed as well as the processing is also distributed. In distributed processing, only processing might be distributed, data can be at a single place, centralized database हो सकता है. But distributed database में data भी distributed होता है और processing भी distributed होती है. Distribution का मतलब है we are dividing the data and putting it at a different locations or different sites where they can be processed. That is known and a software which manage this distribution of data and processing, which manage your data in such a way that it is not dependent on this distribution. That software is known as DDBMS software. They manage your distributed database and processing. Now, to make this distributed database and processing possible, we need different components. I will show you diagrammatically in the next session. Today, just let's discuss it in brief. So in your distributed database, in your DDBMS software, to make it possible, there are 5 components that are required. Can you tell me what is required to make this possible? डिस्ट्रीब्यूटेड डीबीएमएस बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ेगी? Anybody who can tell me? The required hardware, Okay. Network, hardware, then what else? और क्या चाहिए होगा?
नेटवर्क तो चाहिए ही, ऑब्वियसली हार्डवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर भी चाहिए. So we need hardware, we need softwares, we need the network, because see, every data and processing is distributed. They are at a different site, different locations, so they need to be connected with one another to get data from different location, combine it together and show it as one. So for that, yes, we need to have a network. Communication media to chahiye hi chahiye. So we need, first and foremost thing is we need a computer workstations. बिना कंप्यूटर के कैसे काम करेंगे? So we need the computer workstations, then we need network hardware and softwares which enable the communication between these computers. We need the communication media, that is your actual physical media, coaxial cable या fiber optic cable या वायरलेस, जिस भी तरीके से आप उसे कनेक्ट कर रहे हो, तो वो कम्युनिकेशन मीडिया चाहिए आपको, आइदर वायर्ड और वायरलेस मीडिया. And we need a softwares. Now software, basically there are two concepts. One is known as transaction processor and one is known as data processor. सो ट्रांजैक्शन प्रोसेसर का काम क्या होता है? वो सिर्फ ट्रांजैक्शन प्रोसेस करता है. व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस इन डीबीएमएस? व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? नॉर्मल लैंग्वेज में भी व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शंस? बताओ ट्रांजैक्शन क्या होता है? Nobody. What are transactions? No. Data is not a transaction. Transaction means actual processing which we are going to do on the data. बैंक ट्रांजैक्शंस हम बोलते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ट्रांजैक्शंस? Accounting transactions, bank transactions, what do you mean by that? The operation that is carried out. बैंक में पैसे डिपॉजिट करने जाते हो, पैसे रखने जाते हो अंदर, आप बढ़ा रहे हो आपके पैसे, so that is one transaction. You are withdrawing the money, that is also a transaction. You are buying some goods, that is also a transaction. Same way in database, whatever changes we are doing, either we are adding data, updating data, fetching the data, uh, saving the changes in the database using a commit command, or we are rolling back our changes, that are all your transactions in your database. So now these transactions can be processed. As I said, you can have your data also distributed and processing also distributed. Transaction processor का काम होता है सिर्फ transaction को process करना. Means it will be having a data fetched from the database and it will be doing some processing on that data and showing you in a proper format. That is your transaction processing. डेटा प्रोसेसर का काम एक ही होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर करो और फेच करो. That is the work of a data processor. Transaction processor basically works with the fetched data. उसका काम डेटा फेच करना या स्टोर करना नहीं होता है. उसका काम है जो डेटा है उसके ऊपर प्रोसेसिंग करके it will show you the data in a proper format. So that is so these are the main 5 components: computer workstations, network hardware and software, communication media, transaction processor, and data processor. Okay. These are the main 5 components of a distributed DDBMS. Okay. Now, there are different levels of distribution. One where we have the data at a single location and processing is also at a single location, which is known as your centralized database or centralized DBMS, where your data is also at the same location and processing is also at the same location. Fine.
In your DDBMS concept, this distribution is known as single site data, single site processing. SPSD, single site processing, single site data. Second level of distribution is that you keep your data at a single site, but processing can be distributed. That is known as multi-site processing, single site data. Third level is that we have the data also distributed, or let's have data distributed but processing at a single site. So that is known as single site processing, multi-site data. But as we have already learned that that is not possible. When your data is distributed, processing has to be distributed. So we have only the option that is multi-site processing, multi-site data. कि अलग अलग जगह पे डेटा भी है और अलग अलग जगह पे प्रोसेसिंग भी है. That is different levels of distribution. So that we'll see in the next session with the diagram, so you will understand it better. So anybody want to ask anything? Yes or no? Or you are fine with it? But from Thursday, everyone need to attend the session. Okay, and we'll do the programs. Fine. So let's end here if you don't have any questions.